May he prosper, may he flourish in his life. Thank you. I appreciate you and your team. God bless you. Thank you, Dr. Palash Gupta. Hello everyone, I am Palash Gupta. I did my schooling from Central School, New Delhi, and after that I did my graduation and post-graduation from SN Medical College, Agra, India. I was fortunate enough to be awarded gold medal both in my MBBS as well as my post-graduation courses. After that I did my 3 years of senior citizenship in New Delhi, India. I came into practice, stayed here for some time, but then I thought something extra has to be done. As my area of interest was joint replacements, I did my fellowship in joint replacements from Germany. After that, I had a short stint in New Zealand, Auckland to be exact. I came back, then I did my masters in complex surgery from Davos, Switzerland. Now I am here. I have worked in a few hospitals. Currently, since last few years, I am in Max Super Specialty Hospital, Shalimar Bagh. I am heading the joint replacement unit there, and I am working as a senior consultant in Department of Joint Replacement and Orthopedics. Since last few years, from the conventional joint replacement thing, we have shifted to MIS, that is minimal invasive joint replacement surgery. In that surgery, the length of incision is very small and the period of recovery for the patient is very quick. Now we have a navigation system with us also, and I am doing computer assisted navigation surgery for the joint replacement part. If the case is complicated and complex, we take help of the computer system to have the best results possible for benefit of our patients. My name is Mrs. Elizabeth Tinuke Afonja from Nigeria. I came to New Delhi for knee replacement, and Dr. Palash surprised me. He did my knee replacement in a beautiful way. My knee was caving in and he has straightened my knee. Thank you, Dr. Palash. You did my knee replacement in a beautiful way. I appreciate you and your team. God bless you. मेरा नाम अश्विनी कनोत्रा है। हम दिल्ली में रहते हैं, अशोक विहार फेज 2 में। मेरे को घुटनों में प्रॉब्लम थी लेफ्ट साइड में। मेरा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है और फिजियोथेरेपी से, और मेरे को यहाँ पर मैं इधर हेल्प भी करता हूँ हॉस्पिटल के अंदर। थैंक यू डॉक्टर पलाश गुप्ता। Myself हर्षा कनोत्रा और he is my husband। और जैसे पहली मीटिंग में ही हम लोग इतने सेटिस्फाइड हो गए कि हमने कहा नो टेकिंग अ सेकंड ओपिनियन, गो अहेड। हम लोग आगे बढ़े। जस्ट आफ्टर मीटिंग 4 टाइम वी डिडंट टेक अ सेकंड ओपिनियन और हम लोग अपना यहाँ पर आ गए, हमने ऑपरेशन करवाकर आज हम लोग अपना इनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है। डॉक्टर पलाश इज़ वेरी गुड। उनका इतनी कर्टसी है कि वो अपना हमको बड़ी लगता ही नहीं कि हम लोग को इस मीटिंग इज फॉर द फर्स्ट टाइम। वो हमें एक फैमिली मेम्बर की तरह मिल रहे हैं। ही वर्क्स एज ए फैमिली मेम्बर विद अस एंड ही इज रियली वेरी गुड। और बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिलकर एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिन्होंने हमें इनके बारे में रिकमेंड किया। थैंक यू। यहाँ पे मेरे आने का मेन कारण तो ये रहा कि जिस दिन मुझे पता चला कि डॉक्टर पलाश गुप्ता नी रिप्लेसमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तो मुझे थोड़ी सी शांति पड़ी मन में कि शायद मुझे नई जिंदगी मिली। डॉक्टर पलाश गुप्ता के पास जब मैं आई तो इनके पास आते ही मुझे एक रे ऑफ होप नज़र आई। इनसे बात करके मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ। जब तक सर्जरी की डेट आई, मैं बिल्कुल डर जो था दिमाग से निकाल चुकी थी। मुझे किसी तरह का डर नहीं था। डॉक्टर पलाश गुप्ता और उनकी टीम पूरा टाइम ऐसे हमें देख रही थी कि जैसे आज हम छोटे से बच्चे हैं और वो हमारी केयर कर रहे हैं। एंड माई ऑल द बेस्ट विशेस टू डॉक्टर पलाश गुप्ता। मे ही प्रॉस्पर, मे ही फ्लरिश इन हिज लाइफ। थैंक यू। मेरे मिसेज ने पलाश गुप्ता से दोनों नी रिप्लेसमेंट किए हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद ये अब काफ़ी वॉक कर सकती है, चल सकती है। 3-4 किलोमीटर ये वॉक कर लेती हैं। तो मैं पलाश गुप्ता का बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान उनको लंबी उम्र दे और इसी तरह समाज की सेवा करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। Bilateral knee joints. She has difficulty in walking. She cannot walk for more than 50 meters at one go. We are going at bilateral
we are going for the bilateral knee replacement tomorrow. Both the knee will be resurfaced in the single sitting, and hopefully everything should go well. We will try to show the post-op videos to you straight away. We are in this procedure, we are going to strengthen the knee also, and we are going to make the flexion deformity all right. मेरा नाम रमा सिंह है। मेरे घुटनों में बहुत दर्द होती थी। पेन की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया था। रोज़मर्रा का काम भी नहीं कर पाती थी। मैंने डॉक्टर पलाश गुप्ता को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये सर्जरी के लायक हो गया पैर आपका। तो मैं सर्जरी के लिए तैयार हो गई और उन्होंने मेरे बड़े सक्सेसफुल ढंग से मेरी सर्जरी किया। मैं उनका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं चलने फिरने लायक हो गई हूँ। मेरा फिजियोथेरेपी चल रहा है। 1 हफ्ता हो गया है सर्जरी के, और आज मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा नाम चंद्रकांता, मेरी एज 53 इयर्स है। मुझे ये 15-20 सालों से घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप नी रिप्लेस कराओ, डॉक्टर साहब से मिलो। तो मैंने एक्सरा कराया। इन्होंने देखा और बोला कि नहीं, 5 साल पहले आपकी कंडीशन जो हो घुटने की, आपको ऑपरेशन कराना ही चाहिए था। मेरे 3 महीने हो गए ऑपरेशन को। मैं चलने फिरने लग गई हूँ, पैदल जाती हूँ, सत्संग, पार्क। मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट ठीक ठाक हो जाऊंगी। अब तो मुझे खुशी होती है, दिल करता है कि मैं उछल कर सबको बताऊं कि आज के वक्त में डॉक्टर साहब से बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे डॉक्टर। ऑपरेशन होने के बाद 3 दिन बाद ही मैं वापस हॉस्पिटल में ही वॉकर के साथ चलने लग गई थी। और जब छुट्टी हुई, 7 दिन का पैकेज था। 7 दिन के बाद मैं घर अपना गाड़ी से उतर के, काफ़ी डिस्टेंस था, वॉकर से ही चल के आई। हालांकि मेरे घर वालों ने मना किया। मैंने कहा नहीं, मैं चलती हुई अंदर आई और एक सीढ़ी भी थी जिससे मैंने बड़े आराम से अंदर एंट्री करी। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। In the event when the surgery is planned, patient is admitted a day prior to the surgery, because so that we can have all the basic investigations with us, and the surgery usually should not take more than 45 to 90 minutes, which is the average period from skin to skin, that is from opening to closure. As a rule, we always make the patient stand on day 2 of the surgery, and they start walking by the day 3rd. And the total stay in the hospital is 5 to 7 days, depending upon the medical condition of the patient. And the purpose of keeping them for 5 to 7 days is that by the time the patient is discharged, they are independent enough to walk, and they need not have to take help of anyone for their basic daily needs. 7 days is the time, 5 to 7 days, in which the patient becomes comfortable enough. They can walk by themselves, they can do whatever they want to do by themselves. And after that, there is a rehabilitation course of around 2 to 4 weeks, depending upon the age and the weight of the patient. It usually takes that much time for the patient to get fully functional and go back to his normal life. Now let me tell you something about the surgery. I don't prefer calling it a joint replacement surgery. The term I prefer is joint resurfacing surgery, because we are not changing everything about the joint. What we are doing is we are just resurfacing and trying to preserve as much bone as possible and give a very healthy and pain-free joint to the patient. Now let me tell you how the thing works. Now this is the normal joint. What happens is, in this condition,
the menisci between both the bones, they get damaged because of any disease or the age or any previous injury, and the articular surface of the bones, they start getting damaged, they become deformed, they become irregular. So what we do is, we just shave off the damaged part of the thigh bone, that is femur, and the leg bone, which is tibia. The cuts are made in such a way that the joint becomes parallel. So what you see here is the balance is being achieved, it is maintained, and only the bone which is damaged is shaved off, which in turn is supplemented with a smooth articular surface on the thigh part, that is the femur part, and the tibial part. As a result, what we have is a straight leg with smooth surfaces and an insert in between to increase the length and life of the patient. So this is what we do. So it is not the changing about everything, it is just to make the damaged surface have a smooth surface. मैं मिसेज रुमला गरबाल हूँ। मेरी उम्र 57 साल की है। 57 साल की है। 20 साल पहले एक घुटना मेरा ख़त्म हो चुका था, जिससे चलने लायक भी मैं नहीं रही थी। डॉक्टर प्लास के बारे में मुझे जानकारी हुई, मैं उनको दिखाने के लिए आई। उन्होंने कहा वास्तव में ही तुम्हारा एक घुटना ख़त्म हो चुका है। उसके बाद में मैंने 7 दिन के अंदर अंदर अपना घुटना ऑपरेशन करा लिया अपना। उसके बाद में अब मैं जो है चलने लायक हो गई हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 4 किलोमीटर की मैं वॉकिंग करती हूँ। उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो 4 किलोमीटर की हो, 4.5 की हो, 4.5 की भी कर लेती हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का भी काम कर लेती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, इसलिए मैं डॉक्टर प्लास का धन्यवाद देती हूँ तो ताकि मैं चलने लायक हो गई। मेरा नाम लता गोयल, सेक्टर 24 में रहती हूँ। मुझे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं जा सकती थी, बहुत रोती थी। और मैंने एक घुटना रिप्लेस कराया डॉक्टर प्लास जी से, लेकिन इन्होंने मुझे 3-4 दिन चला दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम होता रहा तो हमें अच्छा लगता रहा, और अब मैं एक घुटने की वजह से काफ़ी खड़ी होने लगी हूँ, चलती भी हूँ। डॉक्टर प्लास बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो कितने लोगों को बताऊंगी तो इन्हीं के लिए बताऊंगी। हाँ, नमस्कार जी, मेरा नाम वासुदेव है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/4/1940, यानी कि इस टाइम मेरी 63 साल की एज है। पलाश के बहुत ही अच्छे वो डॉक्टर है जो कि आपका ऑपरेशन करती है। पहले मेरा लेफ्ट का हुआ, ये हुआ था 2 दिसंबर को। उसके बाद उन्होंने फिर 1 महीने का गैप रख के फिर मेरा राइट का किया 17 जनवरी को। 17 जनवरी को ऑपरेशन करने के बाद 8 दिन मेरे को हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद मेरे को छुट्टी दी। और इस टाइम मेरे को इतना आराम आ गया कि मैं मतलब सीढ़ी बिल्कुल आराम से चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। أجي أنت احكي لي شلون من جيتي كانت الألم مال رجليك وشلون هالتصرتي؟ والله جيت تعبان، دكتور بلاش رجلي توجعني. عمليته جيدة وممتعة، بس الحمد لله والشكر ما توجعني زين. She said before that she have pain in her knee. She's very bad pain. She can sit, she can walk normal. After that, Dr. Palash replacement her knee. She joined. She's now very well. She's very happy with Dr. Palash. She said very famous, very great doctor. She's very happy. She can walk without walker. She can walk without any help. Now she's comfortable. تمام والعملية الحمد لله زين. Said during the operation, before the operation, I'm very bad, feel very bad. After the operation, 1 day or 2 days after the operation, I see the difference. I'm very happy. She said, Dr. Palash, good doctor, very kind doctor, and take care so much to the patient. She's very happy about that.